Hello, my name is Nitik Kumar and welcome to our channel Learning Circle. Okay, so in previous class we were discussing coordinate geometry for class 10. So we had discussed about distance formula. We have done distance formula. Okay, so what was the distance formula? So it was nothing but under root x2 minus x. It was x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, so let's do some problems over this concept. Okay, so suppose if it is said that find the distance, find the distance between एक पॉइंट है 2,3 एंड दूसरा पॉइंट है -3, -9। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो ये क्या है, ए है, तो इसको मैं x1 y1 ले लूंगा और ये क्या है x2 y2। अच्छा, x1 y1 लेने का मतलब क्या है कि x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू क्या है 3 है। सिमिलरली x2 की वैल्यू -3 है, y2 की वैल्यू क्या है माइनस 2। सो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए बी डिस्टेंस है, इसी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो सी यू हैव दिस ए बी and what is x2, this is -3, what is x1, this is 2, तो -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज y2 that is -9, this is y1 that is -3 whole square. So simply it will become -5 whole square and it will become -12 whole square. So what is the whole square of -5? That is 25. And what about -12 whole square? It is 144. So after addition, it will become under root 169, that is 30. So what is the distance of AB? It is 13 unit. Okay. So I hope इस क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो। अब नेक्स्ट टाइप का, जैसे एक तो सिंपल यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट पूछते 2 पॉइंट दे दे और बोले कि डिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप सिंपली कुछ नहीं कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आएगा। टाइप 2 आ सकता है। टाइप 2 कैसा आएगा वो मैं बता सकता हूँ। क्वेश्चन है प्रूव दैट P कोऑर्डिनेट है 2, -1, Q कोऑर्डिनेट है 1, -4 एंड R कोऑर्डिनेट है 3, 2 और ये प्रूव करना है कि ये क्या है, वो लीनियर है। अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये P है, ये Q है और ये R है। को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है लाइन। ओके, इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट अगर सेम लाइन पे लाई करे, अगर सेम लाइन पे लाई करे तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। तो अगर मैं ये बोलूँ कि पी क्यू आर कोलिनियर है, इसका मतलब पी क्यू ये और क्यू आर ये अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये पी आर के इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ पी क्यू आर क्या है, कोलिनियर है,
then I can write PQ plus QR is equals to PR. ओके, सो यही हमारा कंसेप्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया. तो व्हाट इज दिस, सिंपली दिस इज PQ प्लस QR इक्वल्स टू PR, राइट. सो क्वेश्चन ये है, क्या हम PQ फाइंड आउट कर सकते हैं? The answer is yes, because we have coordinate of P as well as Q. So what is the formula for PQ? This is nothing but under root x2 minus x1 का whole square, that is 1 minus 2 का whole square. Again y2 minus y1 का whole square, that is minus 4 minus of minus 1 का whole square. Minus 4 minus of minus 1 का whole square. So what will it become? It will become 1 minus 2, that is 1, 1 का whole square 1. Minus 4 minus minus plus, so minus 4 plus 1 minus 3 का whole square 9. So this is nothing but root 10. So we have come to know that PQ is nothing but root 10. Okay, now let's calculate QR. So QR is this. So again I will apply the formula. What is the formula? X2 minus x1, that is 3 minus 1 का whole square, plus y2 minus y1, that is 2 minus of minus 4 का whole square. So 3 minus 1 is nothing but 2, 2 square, that is 4, minus of minus plus 2 plus 4, 6, 6 square, that is 36. So it will become root 14. Now see what we can write here. Root 40 we can write here 4 into 10. So 4 का root बाहर निकलेगा, it will become 2. So 2 root 10. Now next calculate PR. So what is this PR? P is this, R is this. So we can find PR, that is x2 minus x1, that is 3 minus 2 whole square, plus y2 minus y1, that is 2 minus of minus 1 whole square. So it will become 3 minus 2, 1, 1, 1 whole square, 1, minus minus plus 2 plus 1, 3, 3 square, that is 9. So it will become root 10. Now see, if this is if PQ, QR, PR, if these all are collinear, then what will happen कि कोई भी दो साइड को ऐड करने पे तीसरा साइड मिल रहा होगा. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि PQ क्या है, PQ है हमारा रूट 10, PR क्या है हमारा, PR है हमारा रूट 10, QR क्या है हमारा, QR है हमारा 2 रूट 10. एक चीज हम देखते हैं कि अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो ये 2 रूट 10 बन जाएगा. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि PQ प्लस PR जो है वो क्या हो जाएगा, QR. और जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, PQR क्या है, कोलिनियर है. PQR क्या है, कोलिनियर है. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम तो मैंने रफली बनाया था, तो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम कैसा होना चाहिए. तो ये बोल रहे हैं P इधर है, Q इधर है और R इधर है. ओके. So according to this, we can find PQ plus PR is equals to QR. It means we are adding this and this, we are getting this one. Okay. So I hope this is clear. Now let's move ahead on next question. Question is, we have to prove that points A, that is 3 comma 2, point B
that is 5 comma 8, and point C, that is minus 6 comma 5. So, and the diagram is given as this. This is C, this is A, and this is B. So B is 5 comma 8, A is 3 comma 2, and C is minus 6 comma 5. मुझे ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है। हम क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी निकालने का, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. सो अप्लाई द फॉर्मूला. So it will become 5 minus 3 whole square plus 8 minus 2 whole square. So it will become 5 minus 3, 2, 2 whole square, 4, 8 minus 2, 6, 6 whole square, 36. So AB is nothing but root 40. Simply go for AC. AC formula. So you will write minus 6 minus 3 whole square plus 5 minus 2 whole square. So minus 9 whole square, that is 81. 5 minus 2 whole square, that is 9. So 81 plus 9, 90. Just put it here. Similarly, calculate BC. So what is the value of BC? Minus 6 minus 5 whole square. And this is 5 minus 8 whole square. So this is 11 square, and this is 5 minus 8, 3 square. So it will become 121 plus 9 is equals to 130. So we see here, if you remove root, then 40 plus 90 is equals to 130. It means AB square plus AC square is equals to BC square. So what is AB? This is root 40 whole square plus root 90 whole square is equals to root 130 whole square. So this is nothing but 40 plus 90 equals to 130. That's it. It means Pythagoras is being used here. It means triangle ABC is nothing but right angle triangle. Why? Because पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट so that learning becomes affordable. Thank you. Thank you very much.